Hello friends, myself Mitesh Chudasma. Today we are going to discuss topic on symptoms, signs and identification of plant disease. This one is most important topic of plant pathology. Now what is symptoms and sign? Symptoms are the expression of the disease caused by the manifestation of the physical reaction of the plant due to harmful activity of the pathogen. तो symptoms में आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन जो भी क्या चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं सिम्टम्स. देन साइंस. इन साइंस एनी फिजिकल एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज एजेंट इंक्लूडिंग कोई भी स्पोर है, बैक्टीरियल ओजिंग है, उसको साइंस बोलते हैं. नाउ व्हाट इज लोकल इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन, लीजन एंड लोकल लीजन. इन लोकल इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टिंग एजेंट इज लिमिटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट. तो लोकल इन्फेक्शन में जो भी इन्फेक्शन है वो उसके कुछ लिमिटेशन पार्ट में होता है. और सिस्टमिक इन्फेक्शन में जहाँ से भी पैथोजन एंट्री करता है वहाँ से पूरे प्लांट में वो स्प्रेड हो जाता है. इन विच इन्फेक्शन दैट स्प्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन एंड स्प्रेड टू द ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल wilt, virus infection and loose mud. Now lesion. Lesion is localized necrotic chlorotic areas of diseased tissue or organ. Now local lesions. A localized spores produced on the lip upon mechanical inoculation with a virus. तो local lesion में after the inoculation of virus by the insect, when the symptoms is observed, such type of symptom is called as local lesion. Now types of symptoms. There are two types of symptoms caused due to pathogen. First one is morphological symptoms, then histological symptoms. In morphological symptoms, examples are blight, then leaf spot, then necrosis, hypoplasia, hyperplasia and hypertrophy. Necrosis means degeneration of protoplast followed by the death of tissue or organ or plant. Now placid necrosis. A placid necrosis, necrotic symptoms expressed before the death of the protoplast are called as placid necrosis. In placid necrosis में necrotic symptoms expression प्लांट के डेथ होने से पहले देखने को मिलती है, जिसमें एग्जाम्पल्स है येलोइंग, हाइड्रोसिस एंड विल्टिंग. एंड होलो नेक्रोसिस में सिम्टम्स एक्सप्रेशन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट, मीन्स के प्लांट के डेथ होने के बाद उसमें इन्फेक्शन जो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हो उसे बोलते हैं होलो नेक्रोसिस. उसके एग्जाम्पल्स है रोड्स, स्पॉट्स एंड ब्लाइट्स. नाउ प्लेसी नेक्रोसिस. प्लेसी नेक्रोसिस में येलोइंग, विल्टिंग एंड हाइड्रोसिस. Now what is yellowing or yellows? In yellowing, as you can see here in the photograph, appearance of uniform or non-uniform yellowing of leaves due to infection, in which chlorophyll is break down due to infection of the pathogen. Generally it is caused due to fungi, bacteria, protozoa, spiroplasma and phytoplasma. Now next one is wilt. And wilt, as you can see here, symptom is characterized by loss of turgor which results into dropping of the leaves, then stems and flowers. For example, bacterial wilt of tomato. There are two types of wilt observed in the plant. First one is pathological wilt and then physiological wilt. And pathological wilt is caused by the pathogen, fungus, bacteria and virus. And physiological wilt due to water test and high temperature. When the symptoms is observed, that is called as physiological wilt. प्लांट में अगर वाटर स्ट्रेस के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण प्लांट अगर सूख जाता है तो उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल विल्ट्स. नाउ होलो नेक्रोटिक सिम्टम्स. इट मे बी डेवलप ऑन द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. जनरली इन्फेक्टेड टिश्यू टर्न्स ब्राउन. तो होलो नेक्रोटिक सिम्टम्स में प्लांट के कोई भी पार्ट है वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं. उसमें होलो नेक्रोटिक सिम्टम्स आर कैरेक्टराइज इनटू थ्री कैटेगरीज. necrosis of the green plants,
then necrosis of the storage organs, then necrosis of the woody tissue. Now first one is necrosis of the storage organs. इसमें first one is rots, leak and mummification. Now as you can see here, this one is a photograph of damping of, in which damping of the collapse and or death of the seedlings due to extensive necrosis of the stem tissue before and after they emerge from the soil. तो डैम्पिंग ऑफ के सिम्टम्स है वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, प्री इमर्जेंट सिम्टम्स एंड देन पोस्ट इमर्जेंट सिम्टम्स. प्री इमर्जेंट सिम्टम्स में प्लांट है वो इमर्ज होने से पहले ही उसमें डेथ हो जाता है, और पोस्ट इमर्जेंट सिम्टम्स में प्लांट इमर्ज होने के बाद, इमर्ज मीन्स के प्लांट उगने के बाद उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. मीन्स कि प्लांट है उसकी सीडलिंग्स है वो डेथ हो जाती है. नाउ लिप स्पॉट. लिप स्पॉट इज वेल डिफाइंड सेल्फ लिमिटिंग ग्रे और ब्राउन नेक्रोटिक लीजन ऑन द लिप. लिप स्पॉट एज यू कैन सी हियर, दिस वन इज अ फोटोग्राफ ऑफ एंगुलर लिप स्पॉट ऑफ बीन्स एंड सेप्टोरल लिप स्पॉट ऑफ टोमेटो, जिसमें ब्लैक ग्रे कलर के और ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं. Then next one is short hole. Short hole is a necrotic tissue with a lip spot cracks and fall off and leaving a small holes in their place. जिसमें नेक्रोटिक सिम्टम्स डेवलप होने के बाद उसमें जैसे जैसे डिजीज़ आगे बढ़ता जाएगा वैसे उसमें ये जो है पूरा पार्ट डिस्ट्रॉय होने के कारण इस टाइप के आपको होल देखने को मिलते हैं, जिसे बोलते हैं शॉर्ट होल. नाउ ब्लोच. Generally blotch, this disease is observed in garlic, in Aryan and onion. This disease is called as purple blotch, in which necrotic area observed in the stem region, that is brown color fungal mycelium observed in leaves, then stems and shoots. This disease is caused due to Alternaria pori. This one is the causal organism for the purple blotch of the garlic. Now necrosis of the woody tissue. First one is dieback, then canker, then gummosis. In dieback, extensive necrosis of the shoot from the top to downward. Dieback, for example, dieback of chili and citrus. In canker, necrosis of tissue of the bark. In for example citrus canker. तो कैंकर में जो बार्क टिश्यू है, जो भी प्लांट्स है उसके बार्क टिश्यू में नेक्रोसिस होने के कारण जो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं कैंकर. इन गमोसिस, गम लाइक सिक्रेशन इज टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी टिश्यू. गमोसिस ऑफ द स्टोन फ्रूट्स. नाउ डायबैक. दिस इज द स्लाइड शोज द डायबैक सिम्टम्स in which extensive necrosis takes place from the shoot to the tip topward. As you can see here, this plant is extensively destroyed due to extensive necrosis of the disease. Now canker, in which formation of sharply delineated dry necrotic localized lesion on the fruit, then stem part and leaf portion. This one is also photographs of the cankers in which necrosis takes place on the woody portion of the plant. Now gummosis, in which gum-like is secretion takes place from the twig portion of the plant. Now extensive necrosis. Extensive necrosis, it is described as a blight, scald, scorch, blast, anthracnose and firing. In blight, it is characterized by rapid and extensive death of the plant foliage. जिसमें ये जो प्लांट फोलिएज है, प्लांट फोलिएज मीन्स कि प्लांट का जो लीव्स का पोर्शन है उसमें ये जो ब्लैक पोर्शन है वो ये ब्लाइट के सिम्टम्स के कारण ये हुआ है, जिसमें एक्सटेंसिव डेथ होता है. मीन्स कि पूरा जो एरिया है प्लांट का वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है. नाउ एंथ्रेक्नोज. एंथ्रेक्नोज
a formation of discrete dark colored necrotic lesion on the leaves, stem and the fruit. तो ये disease है generally observed in the fruit, stems and leaves portion, which is ये disease है वो कोलेटोटिकम के कारण होता है, जिसमें this type of the symptoms is observed due to this organism. Now necrosis of the storage organ, in which rot, leak and mummification like symptoms is observed due to necrosis. This is the symptoms of the rot, in which softening, discoloration and often decay or disintegration of succulent plant tissue take place and results into fungal or bacterial infection. तो ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के कारण ये जो प्लांट की जो फ्रूट है, फ्रूट का जो अपर पोर्शन है, वो जो पार्ट है उसमें सॉफ्टनिंग हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. देन रूट एंड फ्रूट रोड्स. रूट और फ्रूट रोड्स में एज यू कैन सी हियर, दिस वन इज द फ्रूट रोड एंड दिस वन इज द रूट रोड, जिसमें जो फ्रूट है वो पूरा सूख जाता है नेक्रोसिस की वजह से. और नाउ लीक में जूस लाइक सीक्रेशन फ्रॉम द बार्क ऑफ द फ्रूट्स. नाउ हाइपरप्लासिया एंड हाइपरट्रोफी. दिस वर्ड सेल्फ इंडिकेट एज प्लासिया. प्लासिया मीन्स नंबर एंड ट्रॉफी मीन्स साइज. तो प्लासिया में जो प्लांट है उसके सेल के नंबर में इंक्रीज होने के कारण जो ग्रोथ देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं हाइपरप्लासिया. एंड और हाइपरट्रोफी में प्लांट की साइज है वो इंक्रीज होती है. नाउ सो व्हाट इज हाइपरप्लासिया एंड हाइपरट्रोफी. हाइपरप्लासिया मीन्स ओवरग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज द सेल डिवीजन and hypertrophy means overgrowth due to abnormal cell enlargement. Now hyperplastic and hypertrophic symptoms. तो उसके एग्जाम्पल्स है wound rumors, galls, witch's broom and enations. These are the photo of the tumors and gall formation which is occurred due to hyperplastic and hypertrophic symptoms. In gall, abnormal plant structures is formed due to parasitic attack by microorganism. So just like gall like structure is formed on the root region due to infection of the bacteria, viruses, and in hyperplastic and hypertrophic symptoms, overgrowth of the root region takes place due to hyperplasia and hypertrophic symptoms. In hypertrophy, now witch's broom and enasion. Witch's broom, abnormal form of the plant growth characterized by profuse outgrowth of the lateral buds give a broom like appearance. तो जो प्लांट है उसमें ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. जो इन्फ्लोरेंस जो प्लांट के बर्ड पोर्शन है, बर्ड पोर्शन में ये इन्फ्लोरेंस वो उसमें आउटग्रोथ होने के कारण उसमें ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. नाउ इनेशन. इन इनेशन इज सिम्टम्स इज कॉज्ड ड्यू टू प्लांट वायरसेस एंड स्मॉल आउटग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड ऑन द प्लांट पोर्शन. नाउ हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स in which atrophy, rosacity, ablication and mosaic ablication are they included in the hypoplastic symptom. This photograph shows the hypoplastic symptoms of the atrophy. Atrophy means dwarfing, hypoplasia and stunting. Both are same word. तो ये जो एट्रोफी है उसमें जो प्लांट्स है, एज यू कैन सी ऑन द फोटोग्राफ, जो प्लांट्स है वो स्टंटिंग हो जाता है, मीन्स के प्लांट छोटा रह जाता है. नाउ रोसेटी. इन दिस इंटरनोड्स डू नॉट एनलार्ज एंड लीव्स अ क्लस्टर लाइक पेटल्स ऑफ रोज. फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट रोसेटी एंड पीच रोसेटी. नाउ मोज़ेक. तो मोज़ेक में डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर्स एरियाज ऑब्जर्व होता है. मोज़ेक में ग्रीन कलर्स एंड
येलो कलर्स का पैटर्न है वो देखने को मिलता है। नाउ क्लोरोसिस, एज यू कैन सी हियर इन फोटोग्राफ, लॉस ऑफ क्लोरोफिल टिश्यू ऑफ द प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जिसमें क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने के कारण जस्ट लाइक अ लाइट ग्रीन कलर रिंग इज ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। नाउ मोज़ेक सिम्टम्स, दिस वन इज द मोज़ेक सिम्टम्स occurs due to viral infection in which dark green or light green pattern observed on the leaves due to viral infection. This one is MYME, means mung bean yellow mosaic virus. Then this one is the photograph of the BCMA, means cowpea mosaic virus. Now downy mildew. In downy mildew, formation of the superficial cottony hypergrowth with spores generally observed on the lower lip of the plant. Generally in downy mildew, white cottony growth is observed on the leaves. जो प्लांट की लोअर सरफेस है उसमें वाइट कलर के स्पोर्स दिखने को मिलते हैं। लाइकवाइज डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू में वाइट पाउडरी ग्रोथ है वो अपर सरफेस में देखने को मिलते हैं। एंड इन लिप कर्ल विच इज कोल्ड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, तो लिप कर्ल डिजीज में जो कर्लिंग है वो अपर साइड हो जाता है, लीव्स का कर्लिंग है अपवर्ड कर्लिंग हो जाता है। नाउ सिम्टम्स ऑफ अर्गट, अर्गट में स्क्लेरोसिया है वो डिजीज है वो देखने को मिला। जो इन्फ्लोरेंस है प्लांट का इन्फ्लोरेंस, उसमें इन्फ्लोरेंस में ये स्क्लेरोसिया फॉर्मेशन होता है। देन स्मट, जस्ट लाइक अर्गट इन स्मट पाउडरी spore of the pathogen is observed, as you can see here in the inflorescence. All the inflorescence is covered, and these are the photograph of the seeds in which black spores of black powdery mass of the spore is observed in the seeds of the wheat. Now symptoms of the rust. In rust symptoms, red color rusty pustules observed on the leaves, in which small blister like eruptions on the leaves epidermis created due to पैथोजन, जिसमें ये रेड कलर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पैथोजन है वो यहाँ से एपिडर्मिस में एंटर होता है और एरप्शन ब्लिस्टर लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। थैंक यू।